Hello, Bacho. Good evening. So, what are we going to study today? Today, we are going to read something new. So, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम देखने वाले हैं हमारा डेली रूटीन क्या है और हम क्या क्या चीजें करते हैं. व्हाट ऑल एक्शंस वी डू थ्रू आउट द डे. ऑल ऑफ अस कुड सी इन द पिक्चर्स. नो, हम ये पिक्चर्स में देख सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेक अप. हमें पिक्चर में दिख रहा है कि बेड से हम उठ रहे हैं. तो वेक अप का मतलब होता है नींद से जागना. आई वेक अप, आप नींद से जागते हो. देन यू गेट अप. गेट अप का मतलब है उठना. तो हम देख रहे हैं बेड से उठ रहा है. सो फर्स्ट यू वेक अप, देन यू गेट अप. नेक्स्ट यू टेक अ शावर और यू टेक अ बाथ. आप नहाते हो. वी कुड सी इन दैट दिस पिक्चर यू टेक अ शावर. देन यू ब्रश योर टीथ. आई ब्रश माई टीथ. Then you get dressed. We could all see in this picture we get dressed. Then we brush our hair. हम अपने बाल कंघी करते हैं. We brush our hair. We have breakfast. हम नाश्ता करते हैं. Then we go to school, and in this scenario we come to our online class or we see Diti's video. Okay. So what was all of this? This is our daily routine. ये सारी चीजें हम करते हैं. Or the things we do are known as actions. All the things we do are known as actions. So हम अपनी कॉपी में अभी लिखेंगे एक्शन वर्ड्स. ये नई चीजें जो आज हम पढ़ने वाले हैं, एक्शन वर्ड्स, या इनको हम वर्ब्स भी बोलते हैं, वर्ब्स. So we are going to write about this in our notebook. And what is an action? Action is anything that you do. You sleep, आप बैठते हो. You sleep, you awake, आप जगते हो नींद से. You get up, आप बेड से उठते हो. You brush your teeth, you have shower, you comb your hair, you get dressed up, you have your breakfast, you have your lunch. So all of these things, whatever we do, right now we are sitting, we are studying. So this is also one action. You are writing, this is also an action. So anything and everything we do, जो भी चीजें हम करते हैं उनको हम action words या verbs बोलते हैं. Let's just see some examples. So what is happening here? The kid is looking. All of us could see ना, the kid is looking, वो देख रहा है. जैसे right now you are looking at Didi, so the kid is also looking. Next is run. Run मतलब we could all see from the picture, run, भागना. The kid is running. Meanwhile जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना, you could also do all of these actions कि आपको याद रहे. हम ये actions कर सकते हैं. आप अभी भाग के देख सकते हो कि what is known as running. Then listening. We all of us listening to Didi. हम listening, we are listening to Didi. Jump. How do we jump? Could you jump right now? So the kid is jumping. Reading. All of us are reading. Swimming. We swim inside water. Writing. We write on our notebooks. We play football. Cutting. We cut through scissors. Walking. We walk. Color. We color. We draw. And we sing. So all of we sing. So there are multiple things that we do throughout the day. बहुत सारी चीजें हैं जो हम दिन भर करते हैं. तो इन सारी चीजों जो भी हम actions करते हैं, anything we do are known as action words. Now what are we going to do? This is something you're going to do alongside दीदी. आप दीदी के साथ साथ ये करोगे. सबसे पहले drink. So this kid is drinking. So drink का मतलब हमें क्या समझ में आया? पीना. The kid is drinking water. So drink. Next we have eat. This kid is eating. यानी वो खा रही है. Eat का मतलब होता है खाना. Next we have listen. This lady is listening. वो सुन रही है. कान आगे करके. We listen through our ears. No, ear is our sense organ. We listen through them. Then we have throw away. Throw away. फेंकना. डस्टबिन में कुछ भी फेंकना. Throw away का मतलब होता है बाहर फेंक देना. Throw away. Sing. गाना गाना. Like this lady is singing. And last we have wash. We wash our hands. No, before eating our food, we wash our hand. So these are all actions, verbs.
Next we have cry. This kid is crying. वो रो रहा है. He is crying. Laugh. Laugh मतलब हंसना. हम देख सकते हैं this is the picture for laugh. Ha 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 ha. This is how we laugh. Climb. Climb मतलब होता है चढ़ना. You could all see वो चढ़ने की कोशिश कर रहा है. Climb करना. We have cook. The mother is cooking the food. ये है cook. Then we have wait. Wait मतलब है we could all see this uncle no ये बस स्टॉप पे इंतजार कर रहे हैं. He is waiting there. तो wait मतलब होता है इंतजार करना. Watch TV. All of us watch TV, no? So watching TV is also one action. The kid is watching TV and dance. Both of them are dancing together. वो साथ में डांस कर रहे हैं. हम लोग भी अपने टैलेंट शो में भी डांस. So dance मतलब डांस नाचना. So these are all actions and all of us have to do this in our notebooks. आप क्या कर सकते हो? आप अपने पुराने सालों की कोई कॉपी देख सकते हो, कोई बुक देख सकते हो जिसमें आपको ये पिक्चर्स मिल जाए. So you could also cut and paste or you can draw all of this. बहुत easy pictures आप draw कर सकते हो. Now there is this verb word search. हम ये खुद से करेंगे. इसमें कई सारे action words छुपे हुए हैं और we are going to search for them. हम उनको ढूंढेंगे. So सबसे पहले what is she doing? She is teaching. तो हमारा verb क्या हो सकता है? Teach. So we'll search for teach here. Then what is happening here? Sweep. This is sweep. Sweep मतलब झाड़ू लगाना. तो ये लड़का क्या कर रहा है? झाड़ू लगा रहा है. So we'll look for sweep here. Then what is happening? Then we see कि she is writing. What is she doing? ये लड़की क्या कर रही है? She is writing. So we'll search for write here. These kids are watching TV. So watch हमारा एक action word है. We'll look for watch here. Now this girl is swimming. We could see ना कि वो swimming कर रही है. So we'll look for swim in the word puzzle. This girl is sleeping. वो सो रही है. So इसका verb क्या होगा? Sleep. Sleep is an action. So we'll look for sleep here. What is he doing? ये लड़का क्या कर रहा है? What is he doing? We'll think. What is he doing? Is he walking or is he running? We'll search for the word here. And what has he done? इसने क्या किया? इसने कांच तोड़ दिया है. So उसको क्या बोलते हैं? Break. Break करना कोई भी चीज. So we'll look for a break here. तो आपको इन सारे वर्ड्स को ढूंढना है इन पिक्चर्स को देख के पहचान के एंड यू विल हैव टू शेयर विद दिस दीदी. आपको वर्ड सर्च कंप्लीट करनी है और फिर दीदी के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करना है. Also there is one thing कि these are all sight words for our this week. तो आप क्या करोगे? You will have to make an audio और आपको रोज दीदी के साथ ये वर्ड्स बोलकर शेयर करने हैं. The, of, and, a, to, in, is, you, that, it, he, was, for, on, are, as, with, his, they, I. These are all sight words and इसको हमें learn करना पड़ता है. इसमें समझने का कुछ नहीं होता है. We have to learn these words by looking at them. तो हम ये learn करेंगे और दीदी को रोज इनका ऑडियो भेजेंगे. Okay, so all of us have to do all the exercises that Didi has given and we have to complete our work and we have to send this to Didi. All right, thank you.